Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of Feb. The session will be quite interesting and important. So students, there was a delay in the video today for some reason, so kindly adjust. In this video students, we will be talking about the third edition of the India Energy Week that was held in Delhi. For the first part and second part we will be discussing it here. Then DOT and ITU, they have collaborated to shape the future infrastructure with AI driven technologies here, twin technologies here. We will be discussing about it. Then Jal Thal Raksha 2025 exercise was held in Gujarat. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So let's start students. We are talking about national affairs here, and in national affairs, India Energy Week. This is the third edition of the India Energy Week that is being held. So first question. Second, what is the location? Where is this being event held? It was held at Yashobhumi. Yashobhumi is the India International Convention and Expo Center. Where is this located? It is located in New Delhi, Dwarka. This event was held from 11th to 14th of Feb. Right, then who organized it? It was held under the patronage of Ministry of Petroleum and Natural Gas, jointly organized by Federation of Indian Petroleum Industry and DMG events, right? And this gathered more than 700 exhibitors, 500 plus speakers, 70,000 plus attendees, becoming the world's second largest global energy event. Now this question can be asked, that which is the world's second largest global energy event that took place recently? It was in India, that was held at Yashobhumi. It was the third edition of India Energy Week. Next thing, remember, this platform served as a platform for various policymakers, industry leaders to collaborate on sustainable energy solutions. And remember, the India Energy Week for 2026, it is scheduled to be taking place in Goa. Right, that next year will be in Goa. Also, the first edition was inaugurated, or the first time this India Energy Week was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2023 in Bengaluru, Karnataka. The main objective of this India Energy Week is basically to foster a global collaboration discussing various energy security, growth, technologies, innovations, and promote sustainability. Right, apart from this, you will be seeing the Energy Startup Challenge here, that is Avinya 2025, that is Energy Startup Challenge led by Ministry of Petroleum and Natural Gas, recognize startups for carbon dioxide capture, environmental social governance solutions and renewable energy solutions. Then is your Vasudha, that is Oil and Gas Startup Challenge, that is an awarded AI driven innovation in the upstream oil and gas sector by overseas startups. So do remember them also. Apart from this, there were 9 thematic zones of this India Energy Week, such as your hydrogen, biofuel, renewable energy, LNG, Make in India, city gas distribution, petrochemicals, innovation zone, digitalization zone, and many more. Apart from this, you can see India has rose from 10th to the 5th largest economy in the past decade, and solar energy capacity grew 32 times, making India the third largest solar power producer globally. Also, renewable energy milestone, if we talk about the non-fossil fuel capacity tripled, making India the first G20 nation to meet the Paris Agreement climate goals. Important, which is the first
G20 nation that has met the Paris Agreement climate goals, it is our India. Then India has achieved 19% ethanol blending, targeting 20% by October 2025, reducing carbon dioxide emissions and saving foreign exchanges. Moving on, next remember GAIL and Accelera, they have by Cummins, they have signed this MOU for clean energy transition. Next is the second part of the same, that is third edition of India Energy Week. If we discuss about this, here you can see BPCL, that is Bharat Petroleum Corporation Limited, they have signed an MOU with Shipping Corporation of India to develop dedicated and efficient maritime infrastructure. First thing. Second is Azerbaijan State Oil Company of Azerbaijan Republic, that is India's Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, and ONGC. They have also signed a non-binding MOU that will explore the strategic opportunities in the energy sector. And again, students, I'm reminding you, this is the second or world's second largest global energy event. Next is DOT and ITU collaborated to shape future infrastructure with AI-driven digital twin technologies. See, if we are discussing this, remember, first thing that Department of Technology, Department of Telecommunication, it comes under the Ministry of Communication. They have partnered with International Telecommunication Union that is located in Geneva, Switzerland, and they have signed a letter of intent that will collaborate on advanced infrastructure planning using the AI driven digital twin technologies. Right, then here if we look at this, in addition to infrastructure planning, DOT and ITU signed an agreement to initiate a Doctor of Philosophy, that is PhD fellowship scheme focused on telecommunication and emerging technologies. This proposed scheme envisions supporting PhD fellowships of over 5 years in the ITU focus areas. And here you can see for ITU where is the headquarters, Geneva, Switzerland, and Secretary General. Next is military exercise Jal Thal Raksha 2025. This was held in Gujarat to enhance the coastal security. Right, so question can be asked about location. Where was this held? It was held in Gujarat, that is at the Beat Dwarka, Gujarat. The primary objective of this exercise in Dwarka and its surrounding island is basically to respond to the coming of the illegal encroachments there, right? Then this exercise involved participation of 11 Ahmedabad and 31 Jamnagar army units, as well as the Indian Coast Guard and the Marine Police took part in this exercise. Next is Volvo Trucks. They have launched India's first road train for efficient logistics, right? This India's first road train was flagged off in Nagpur, Maharashtra. It was flagged off by whom? Nitin Gadkari ji. Correct. Then it was developed by Bengaluru, Karnataka based Volvo Trucks. It was developed by Volvo Trucks, that is Bengaluru, Karnataka based, and they are being operated by Gurugram, Haryana based Delivery Limited. Correct. Developed by Volvo Trucks, being operated by Delivery Limited. Right. These are the first road train that is developed by Volvo Trucks. Right, now we will discuss this Volvo forward control medium height cab 420 by 4 by 2 road train features a 24 feet intermediate trailer and a 44 feet semi trailer, offering total cargo volume of 144 cubic meter, which is 50% higher than the standard semi trucks. Next is international affairs. Prime Minister Narendra Modi visited France and USA recently. In France, he took part in the AI summit, right? He was in France from 10th to 12th of Feb, and this was at the invitation of Emmanuel Macron, the president of France. And this was the Prime Minister Narendra Modi's 6th France visit. During this, he took part in the AI summit. Right? Where was this AI summit held? It was held in Paris, France. Right, and remember this year here only during this event or during this summit, Prime Minister Narendra Modi announced that next year in 2026 our India will be hosting the next AI summit. Correct. Apart from this, remember Prime Minister Narendra Modi was also on an official visit to USA. That was the 10th visit of Prime Minister to the USA. Right. Apart from this, remember here, as we have seen about the AI summit, next thing we see, remember when he was on a visit to USA, he launched a new initiative, that is ASIA,
What is this ASIA? This was launched during when he was in USA. ASIA is your Autonomous Systems Industry Alliance. I repeat, Autonomous Systems Industry Alliance. Correct? Very important, students. So do remember these two things. Moving on, here you can see about the AI Exchange Summit held in Paris, France, and as PM Modi said, the next AI Summit will be held in India in 2025. Then also remember, Prime Minister Narendra Modi took part in the 14th edition of India-France CEO Forum. Next is SpaceX CEO. When he was in USA, Elon Musk gifted Prime Minister Narendra Modi a heat shield tile from SpaceX Starship test flight. Right, this heat shield is basically a small part of the rocket of Starship that was gifted to him by Elon Musk, the owner or the CEO of Tesla and SpaceX. Next is Indian Navy's participation in the International Fleet Review 2025 and Exercise Dash. What is the exercise we are talking about? Exercise Komodo. Right, so Indian Navy recently took part in the International Fleet Review 2025 and the 5th edition of the naval exercise by the name Komodo. What is the location where this exercise being held? It was held in Bali, Indonesia. Right, and this was from 15 to 22nd of Feb that we observed this exercise Komodo, the 5th edition of this multilateral naval exercise. And here in this exercise from India, INS Shardul took part in this exercise. Apart from this, P8I long range maritime surveillance aircraft also took part in this exercise. Next is Brazil to host the BRICS Summit 2025 in Rio de Janeiro in July. See, we know that for last year it was Russia that was having the presidency, and in Russia it was Kazan where this was held, and there was a declaration, Kazan Declaration, that was signed. Can you tell me in the homework section, students, what was this Kazan Declaration? We have discussed this multiple times, right? So coming back now, Russia handed over the presidency to Brazil, and now Brazil will be hosting this BRICS Summit in Rio de Janeiro in the July month, right? From 6th to 7th of July this will be held. Next is banking and finance. SEBI has introduced the new rules for the disclosure on related party transaction. Right, as per SEBI, they have introduced the new industry standards under which the listed entities, they are required to provide minimum information to the audit committee and shareholders when seeking approval for the related party transaction. These new rules will be coming into effect from 1st of April 2025. Also, as per the new rules, SEBI has mandated the listed entities to provide the audit committee with the information as outlined in the industry standards while submitting any proposal for review and approval of this related party transactions. Right, and they will be coming into effect from 1st of April. Here you can see the new industry standards. They were developed by ISF, that is Industry Standard Forum, which comprises the representatives from ASSOCHAM, CII, FICCI, under the aegis of stock exchanges and consultation with SEBI. As per SEBI, the industry association and stock exchanges will publish these new standards on their respective web portals to provide a uniform approach and assist listed entities in complying with the requirements. Next, what is an AIF, Alternative Investment Fund? Right, this is a privately pooled investment vehicle that collects funds from the sophisticated investors, whether Indian or foreign, which invests in alternative asset classes such as private equity, VC, hedge funds, and many others. Next is economy and business. India's solar share to surge, renewables to contribute 27% of the energy. What it is saying is that the solar energy generation in India is growing now, right, at a very faster rate, and now it will be contributing 27% of the energy mix by 2027 as per the data released by International Energy Agency. I repeat, India's share of renewable energy is projected to increase from 21% in 2024 to 27% in 2027 according to IEA, and the growth here is mainly driven by solar power, which is expected to increase by more than 28% between 2025 and 2027. Right, this will balance economic growth, energy security, and environmental sustainability also.
Apart from this, if we talk about wind energy between 2018 to 2024, it grew at 7% CAGR, forecasting an increase to 11% CAGR between 2025 to 2027, whereas hydropower, it is expected to grow at 7% CAGR between 2025 to 2027, and in 2024 nuclear energy capacity rose by 13%, and the government plans to triple this capacity from 8.2 gigawatt to 22.5 gigawatt by 2032. If we talk about IEA, who is the executive director of IEA? Fatih Birol. Right, where is the headquarter? It is in Paris, France. Headquartered in 1974. Next is E-Plane and ICATT. They have signed a $1 billion deal for 788 electric vertical takeoff and landing air ambulances. That means it can vertically take off and land. Right. So E-Plane and ICATT. E-Plane, right? This is a electric aircraft startup incubated by IIT Madras, that is in Chennai. They have partnered with ICATT, that is your International Critical Care Air Transfer Team, correct? And here they have signed a deal worth $1 billion for 788 electric vertical takeoff and landing air ambulances. Right, these ambulances, or these EVTOL air ambulances, aims to transform the urban travel by developing the battery powered aircraft that can take off and land vertically to avoid road traffics. And this air ambulances, they will offer fast, efficient and eco-friendly medical transport by addressing the delays in the road ambulances that affect the emergency response team. These ambulances, they operate at a top speed of 200 km per hour and has a range of 110 km. Next is Odisha government and EESL. They have collaborated to enhance the energy efficiency initiatives. Department of Energy of the Government of Odisha and EESL, that is your Energy Efficiency Service Limited, they have recently partnered to enhance efficiencies. Say for example, how can we increase the, or how we can bring the new technologies, how can we do the cost cutting, how can we improve the energy uses, right? How can we make sure that the climate is not affected, how can we do clean cooking, right? Capacity building initiatives and many more. Next is Ganesh Kumar has appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India. As you can see him in the picture, Ganesh Kumar he's been appointed as the 26th Chief Election Commissioner by the Prime Minister Narendra Modi Selection Committee. He will succeed whom? He will be succeeded Rajiv Kumar, and became the first CEC to be appointed under the newly established law governing the selection of election committee members. Also, he will assume his charge from 19th of Feb 2025 and will hold the position till 26th of Jan 2029. Science and technology. India's 4th generation deep ocean submersible Matsya 6000 has completed a wet testing. See, we have seen about this Matsya 6000. What is this? This is a submersible 4th generation vehicle that will be used to do the ocean research or to ocean exploration, right? It will be going underwater and we will be doing various tests with this Matsya 6000, right? It has been developed, or this was developed and tested by the National Institute of Ocean Technology, right? That is in Chennai, and it was done under the Samudrayan project, correct? And here this was tested at the L&T shipbuilding facility in Kattupalli, Chennai, Tamil Nadu, right? Tested at this L&T shipbuilding facility, developed and tested by NIOT under Samudrayan project, right? Take a note of this. If we talk about NIOT, who is the director? Balaji Ramakrishnan, headquartered in Chennai, Tamil Nadu, established in 1993. Moving on, students, to sports. Uttarakhand to host the 38th National Games. Services topped medal tally with 121 medals. What is the services top? That means that SSCB. What is SSCB? SSCB is your Services Sport Control Board. They have secured the top position in the 38th edition of the National Games that were held in Uttarakhand. So first thing first, this is the 38th edition of the National Games held in Uttarakhand,
SSCB secured the first position here, right? And they were held from 26th of Jan to 14th of Feb, right? And here SSCB has 121 medals here. Correct? Take a note of this. In this, Maharashtra state has secured the second position in the overall medal tally with 201 medals. Then it is followed by Haryana at third position and the event themed Green Games. The focus here was on sustainability. Also, the latest edition of these national games, they witnessed the participation of more than 16,000 athletes. Moving on, and here you can see the winners respectively. Next is veteran space scientist and Padma Shri awardee R. Manika Vasagam has recently passed away, as you can see him in the picture, right? He passed away at the age of 84. He is a veteran space scientist of ISRO and a Padma Shri awardee. R.M. Vasagam recently passed away. He was honored with this Padma Shri in 1982. That is the fourth highest civilian award, and this was in the field of science and engineering. Right? So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial in your learning. Next, name the author of the book, that is Vision to Victory, Unleashing India's Small and Medium Enterprise Platform. Ajay Thakur. Ajay Thakur, he has launched this book, and this book was published by Invincible Publications Private Limited. This book covers the power of belief, also the growth of SMEs, how we can help them to help them grow, and also their recovery after COVID-19. Also, it features the stories, that is the success stories of those small businesses. Also, SME, it is the backbone of India, generating over 45% of the industrial output and contributing to nearly 30% of the nation's employment. Next, who is the author of the book titled Modi Log, Conversations for a Viksit Bharat? This book has been authored by Dr. Ashwin Fernandez, right? He is the executive director of UK-based Quackrelli Simon World Ranking, and he presented this book. Correct? It was presented to Ramnath Kovind, who is the former president of India, and this book was launched in New Delhi. Correct? Also, this book highlights the influence of Prime Minister Narendra Modi's very famous radio show, that is Man Ki Baat. Moving on, who is the author of the biography of late Mr. Ratan Tata, that is Ratan Tata, A Life? So Thomas Matthew, he is the author of the biography here, right? This book has been published by HarperCollins India, and it explores the Ratan Tata's journey from his isolated childhood to become one of the biggest industrialist and also person who is a biggest philanthropist of India, who was the biggest philanthropist of India. Can you tell me the name of the places in Maharashtra that has been renamed, or Udyog Bhavan that has been renamed after Ratan Tata ji? Name it. Next, who has recently released 3 publications of the Supreme Court of India in New Delhi? So who released it? It was released by Draupadi Murmu ma'am, the President of India, right? And this was in the presence of Sanjeev Khanna, who is the current Chief Justice of India, as well as the former Chief Justice of India, that is D.Y. Chandrachud ji. Also, the publications of the book were titled Justice for Nation, Prisons in India, and Legal Aid Through Schools. Legal Aid Through Law Schools. These are the 3 publications that has been released. Next, who is the author of the recently released book Why the Heck Not, co-authored by Arpana Jain? So, Khushpal Singh, right? He is the co-author of, along with Arpana Jain, for the book Why the Heck Not. This book published by Penguin Random House India, and it is an inspirational book that talks about the success of and taking the life lessons from KP Singh's journey, as well as Arpana Jain's leadership expertise. Right? So these were your books and author, students. Now let's move to some obituary. Name the renowned physicist and Padma Shri awardee who has recently passed away in October 2024. So Rohini Godbole, right, passed away at the age of 71 in Bengaluru, Karnataka. She is a phenomenal role, or she played a phenomenal role in both science and gender equality, to promote gender equality. She was born in 1952 in Pune, Maharashtra. Right. Apart from this, for her outstanding contribution, she also received Padma Shri Award in 2019, as well as the French National Order of Merit in 2021. Next,
Padma Shri awardee and chairperson of Economic Advisory Council to the Prime Minister Bibek Debroy passed away in November. Which field did he honor Padma Shri in 2015? Right, he was honored with Padma Shri in 2015 in the field of literature and education. He has also served as the member of Niti Aayog since its inception in 2015, and Niti Aayog was formed by Prime Minister Narendra Modi. Correct. And next thing, remember, he was also appointed the chairman of the newly formed Economic Advisory Council to the Prime Minister in 2017, and he was honored with Padma Shri in 2015. That is the fourth highest civilian award. Next, name a renowned Gusadi dance master and Padma Shri awardee who passed away in October 2024. So, Kanaka Raju, right? A renowned Gusadi dancer passed away at the age of 84 due to health related concerns in Telangana. Gusadi, this is a famous folk dance of Telangana. Next is name the former judge of Karnataka High Court and key petitioner in the right to privacy matter who passed away in October. So, K.S. Puttaswamy, a former judge of the Karnataka High Court who was a key petitioner in the right to privacy matter, passed away at the age of 98. Born in 1926 in Karnataka, he became an advocate in 1952 and then became a judge in the Karnataka High Court in 1977. Next, name the Padma Bhushan awardee and folk singer who passed away in November 2024. So, Sharda Sinha, right? A renowned folk singer who popularly known as Bihar Kokila or Nightingale of Bihar, passed away at the age of 72 due to complications of blood cancer in New Delhi. And he was born in 1952 in Bihar only. Sharda Sinha, famously known for many songs, and she was honored with Padma Shri in 1991 and Padma Bhushan in 2018 for her contribution to folk dance, contribution to music industry. Next, name the person who is the founder of British Physical Laboratories Group, passed away in October. So, T.P. Gopalan Nambiar, right? The founder of British Physical Laboratories passed away. And this BPL, it is one of the leading consumer electronics company. He was honored with the Electronics Man of the Year award in 1992. National Citizens Award in the year 2000, Lifetime Achievement Award in 2007. Next, name the world-renowned Mridangam scholar who passed away in November 2024. So, Varad Rao Kamlakar Rao, right? A world-renowned Mridangam scholar, a disciple of the Palghat Mani Iyer, passed away at the age of 88 in Andhra Pradesh. Born in 1936, he has received several awards such as your Central Sangeet Natak Academy Award, also the recipient of the President Medal from the President Sarvapalli Radhakrishnan. He has played many radio, national music programs and Doordarshan special programs also. Next, in November, India's legendary Sarangi exponent and Padma awardee Pandit Ram Narayan passed away. In which year Pandit Ram Narayan received the Padma Shri award? It was in 1976 when he received this award. He received Padma Shri in 1976 in the field of art, Padma Bhushan in 1991 in the field of arts, and Padma Vibhushan in 2005 in the field of. Students, let's start with the homework part. First is, recently, which of the following disease has been reported in the Democratic Republic of Congo since September 2023, right? Then second, what is the amount achieved by India in the defense production, domestic defense production? You have to tell me the amount. Third question, recently which country has partnered with India for quick impact projects? Fourth question, tell me cyclone exercise was held recently between India and which other country? Fifth is, which state will be hosting the world's largest Jhumar dance performance? So these are your 5 homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. स्टूडेंट्स, आज वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम रीजंस, काइंडली एडजस्ट. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक की. देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटीयू ने कोलैबोरेट किया कि कैसे हम एआई की मदद से, जो ट्विन टेक्नोलॉजीज की मदद से हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में. देन हम बात करेंगे जल थल रक्षक एक्सरसाइज की एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स न्यूज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा.
ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से। हम बात करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक। ये हमें देखने को मिला इन दिल्ली। कहाँ पर? IISc यशोभूमि में, राइट। ये यशोभूमि IISc क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, IICC, राइट। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में है, द्वारका में है। ये आपका इंडिया एनर्जी वीक 11 से लेके 14 फरवरी तक हमें देखने को मिला था। एंड इवेंट का हुआ था यशोभूमि में। याद रखेंगे, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी इवेंट था। यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा एग्जिबिटर्स, लेट मी शो यू, यहाँ पर 700 से भी ज़्यादा एग्जिबिटर्स, 500 से भी ज़्यादा स्पीकर्स, 70,000 से भी ज़्यादा अटेंडीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिले इस इवेंट के दौरान, राइट। और भाई यहाँ पे जो 2026 का इंडिया एनर्जी वीक हमें या देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? गोवा में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, एनर्जी स्टार्टअप चैलेंजेस थे। अवेनिया जो कि है एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज, एंड दूसरा है वसुधा जो कि ऑयल एंड गैस स्टार्टअप चैलेंज रहेगा। इसके बाद देखें, अगर हम इंडिया की अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडिया 10वें पोजीशन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन द पास्ट डेकेड। सोलर एनर्जी 32 गुना बढ़ गई है, 3rd लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर बन गया इंडिया ग्लोबली। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी ट्रिपल्ड, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट G20 नेशन जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल्स को यहाँ पे अचीव करा। देन हम 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग पहुंच चुके हैं। हम 20% अचीव कर लेंगे बाय अक्टूबर 2025। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इससे रिड्यूस होगा एंड फॉरेन एक्सचेंजेस में भी यहाँ पे सेविंग हमें देखने को मिलेगी। इसी के अलावा ये जो इंडिया एनर्जी वीक था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, LNG जो कि है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, डिजिटलाइजेशन सेक्टर, इन सब के ऊपर यहाँ पे हमने बात करी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एक्सेलरा बाय क्यूमेंस, इन्होंने MOU साइन किया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके। इसी के अलावा अगर हम बात करें सेकंड पार्ट ऑफ दिस का, सेम ही है, जस्ट एक दो चीज़ एडेड हो गई हैं। पहली चीज़ तो याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी इवेंट है। एंड इसी के अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एक एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा सके। इसी के अलावा अजरबैजान की स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक एंड इंडिया की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एंड ONGC, इनके बीच में भी यहाँ पे MOU साइन होता हुआ दिखा हमें, राइट, फॉर बेटर एक्सप्लोरेशन एंड बेटर प्रोडक्ट्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं DOT एंड ITU। DOT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये कहाँ पर आ जाता है ITU? ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इन दोनों के द्वारा मिलकर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है कि हम कैसे AI की मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर कर सकते हैं, राइट। हमारे आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि AI ज़्यादा बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है, ज़्यादा बेटर एफिशिएंट मॉडल बना सकता है, जिसकी मदद से हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे DOT एंड ITU ने PhD फेलोशिप स्कीम भी लाए हैं इसके अंडर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रो करने के लिए, राइट।
तो कैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बढ़ावा दे सके। इससे क्या होगा, जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और आगे सामने निखर के आएगा। और हम वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने आपको कि डिज़ास्टर के टाइम पे जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम कैसे पहले से हम फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें, कैसे हम उसको एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन टेलीकॉम सेक्टर एक डिज़ास्टर प्रूफ बना सके, तो उसके ऊपर भी यहाँ काम किया गया, राइट। तो सिमिलरली एआई की मदद से कैसे हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर ये किया जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे रिसर्च के ऊपर बात की जाएगी, एज वेल एज जो प्रपोज स्कीम रहेगी सपोर्टिंग पीएचडी फेलोशिप ओवर 5 years इन द आईटीयू फोकस एरिया। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा आईटीयू का, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं जल थल रक्षा 2025। ये एक्सरसाइज गुजरात में हुई, कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज थी। मरीन पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉल्वो ट्रक्स। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला रोड ट्रेन फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, राइट। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना, राइट। तो ये इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, इसको ताकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में हमारा जो पेलोड है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, इसीलिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, इसको बनाया गया है वॉल्वो ट्रक्स के द्वारा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन ट्रक्स को ये जो बनाए गए हैं, ये फर्स्ट रोड ट्रेन, ये इनको यूज़ कौन कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है डिलीवरी, जो कि गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी रहेगी, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड एक और चीज़, ये मेजर शिफ्ट रहेगा इंडिया के लॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पर आप देखेंगे जो अमाउंट ऑफ कार्गो पहले होल्ड की जाती थी वो अब बढ़कर 144 क्यूबिक मीटर हो गई है, जो कि 50% है हायर देन द स्टैंडर्ड सेमी ट्रेलर्स। सो ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी विजिट पे थे फ्रांस में एंड यूएसए। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में इन्होंने एआई समिट को अटेंड किया, राइट। एंड ये एआई समिट कहाँ पर हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। एंड बोला गया इनके द्वारा कि आने वाली जो एआई समिट होगी वो हमारा इंडिया होस्ट करेगा, राइट। आई रिपीट, जो नेक्स्ट एआई समिट होगी वो हमारा इंडिया होस्ट करेगा, कब, 2026 में। ये भी मार्क करेंगे। फिर यहीं पे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन एंड पीएम मोदी, इन दोनों के द्वारा इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम में भी पार्टिसिपेट किया गया, ये भी याद रखेंगे। एंड अगर मैं बात करूं इंडिया और यूएसए की, तो इंडिया जब यूएसए में प्रेसिडेंट जब यूएसए में थे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ASIA। ये क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। चलिए, फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर यूएसए में थे, इन्होंने विजिट किया था वॉशिंगटन डीसी में, राइट। तो इलॉन मस्क से मिले एंड ये डोनाल्ड ट्रंप से मिले। तो जब ये इलॉन मस्क से मिले तो इलॉन मस्क ने इनको हीट शील्ड टाइल यहाँ पे गिफ्ट करी फ्रॉम स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट। ये कि एक जेस्चर था, गुड जेस्चर था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में एंड एक्सरसाइज कोमोडो में। एक्सरसाइज कोमोडो, ये एक्सरसाइज जो कोमोडो है ना, याद रखेंगे 5वां एडिशन है इस मल्टी नेवल एक्सरसाइज का, कोमोडो का। लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, ये हुआ था बाली में। बाली कहाँ पर, इंडोनेशिया, राइट। एक और चीज़, यहाँ पे इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS शार्दुल का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इन दिस एक्सरसाइज कोमोडो एंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जहाँ पर इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। 15 से लेके 22 फरवरी तक ये हमें मल्टी नेवल एक्सरसाइज कोमोडो देखने को मिली थी। इसी में एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया के P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्राज़ील होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट 2025 को रियो दे जनेरियो में इन जुलाई मंथ। देखो, इससे लास्ट किसके पास थी, रशिया के पास ब्रिक्स की समिट थी। रशिया ने कजान में ये समिट कराई थी एंड कजान में एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, कजान डिक्लेरेशन। आप मुझे कमेंट करके बताओ वो कजान डिक्लेरेशन था क्या, राइट। फिर रशिया ने अपनी प्रेसिडेंसी दे दी थी किसको, ब्राज़ील को, और अब ब्राज़ील होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट 2025 की, कहाँ पर, रियो दे जनेरियो में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस करे हैं नए रूल्स फॉर द डिस्क्लोजर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये नए रूल्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे 2025 से। और इनके अलावा बताया
कि सेबी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं ये नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अंडर द लिस्टेड एंटिटीज़, जिनको जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करानी है ऑडिट कमेटी को एंड शेयर होल्डर्स को जब वो कोई भी अप्रूवल लेंगे फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एंड एज पर द न्यू रूल सेबी ने यहाँ पे बोला कि जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, राइट, दे नीड टू प्रोवाइड ऑडिट कमिटी विद द इंफॉर्मेशन एज आउटलाइंड इन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट। जब भी वो कोई प्रपोजल या फिर कोई भी रिव्यू देंगे ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन का, तो जितनी ज़रूरत होगी इंफॉर्मेशन देने की उतनी ही देनी है, एक्स्ट्रा देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे अगर हम देखें ये जो नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं इनको डेवलप किया गया है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम के द्वारा, विच कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एसोचैम, Confederation of Indian Industry and FICCI under the aegis of stock exchanges and in consultation with SEBI. नेक्स्ट आ जाते हैं AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक टर्म याद रखेंगे। जब प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल साथ में फंड्स कलेक्ट करती हैं वेरियस इन्वेस्टर से, जो वो इंडियन भी हो सकते हैं फॉरेन भी हो सकते हैं, और उनको ऑल्टरनेटिव क्लासेस में इन्वेस्ट करती है जैसे इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आ जाते हैं। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो सोलर शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, या फिर अगर हम बोले ओवरऑल जो कंट्रीब्यूट करेगा 27% ऑफ द एनर्जी बाय 2027। अगर ये डाटा देखें तो ये कह रहा है कि अभी 21% जो एनर्जी मिल रही है हमें 2024 में सोलर एनर्जी से, वही बढ़ के 27% तक हो जाएगी 2027 में। ये डाटा रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, एंड ये बताता है कि जो ग्रोथ है इसमें वो रिन्यूएबल एनर्जी वो मेनली ड्रिवन है सोलर पावर से, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय मोर देन 28% बिटवीन 2025 से 2027 तक। वहीं पे अगर हम देखें 2028 से 2024 के बीच में जो एनर्जी है विंड एनर्जी वो 7% CAGR से ग्रो करी, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 11% से ग्रो करेगी 2025 से 2027 के बीच में। वहीं पे हाइड्रो पावर की बात करें जो 7% से अभी ग्रो कर रहा है CAGR, एंड 2024 में न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ गई 13% से, एंड द गवर्नमेंट प्लान्स टू ट्रिपल दिस कैपेसिटी फ्रॉम 8.2 गीगावाट्स टू 22.5 गीगावाट्स बाय 2032। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो है फाती बिरोल। फाती बिरोल हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आ जाते हैं ई प्लेन। ई प्लेन बेसिकली एक इलेक्ट्रिक एयरप्लेन स्टार्टअप है इंक्यूबेटेड बाय IIT मद्रास। इन्होंने ICATT के साथ अभी एक $1 बिलियन की डील साइन करी है 788 EVTOL एयर एम्बुलेंसेज के लिए, राइट। EVTOL क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो मतलब आप जैसे अगर मान लो ये सरफेस है तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे टेक ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ये लैंड कर सकेगा। ये एक तरीके की एयर एम्बुलेंस रहेगी, राइट, जो कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगी, पावर एफिशिएंट भी रहेगी, राइट। ये बैटरी पावर्ड एयरक्राफ्ट रहेगा जहाँ पे हम देखेंगे इसको एयर एम्बुलेंस की तरह यूज़ किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार इमरजेंसी के टाइम पे रोड ट्रैफिक्स में ना आप फंस कर, जो एक क्रूशियल पीरियड होता है, जो गोल्डन आवर होता है जिसमें पेशेंट को ज़रूरत होती है कि वो उनको ट्रीटमेंट मिल सके, कई बार ट्रैफिक की वजह से या ट्रैफिक की वजह से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रैफिक में फंसकर कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, करेक्ट। तो ऐसे में हम क्यों ना उसको एज अ एयर एम्बुलेंस की तरह यूज़ कर सकें, एंड एक ही जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली हवा में पेशेंट को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, एंड इसी के लिए यहाँ पे $1 बिलियन का ये अभी डील साइन की गई है। ये जो एयर एम्बुलेंस रहेगी ना 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड पे ट्रैवल करेगी, एंड इसकी रेंज 110 किलोमीटर के आसपास रहेगी, एंड एक्सटेंड करके उसको स्लो स्पीड पे चला के 200 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने अभी EESL है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इनके साथ अभी एक कोलैबोरेशन किया ताकि एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पे इनिशिएटिव्स को लाया जा सके, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाई जा सके, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को सामने लाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल LED देखें तो LED बल्ब एक रेवोल्यूशन था। इससे पहले जो बल्ब आते थे ना फ्लोरेसेंट बल्ब, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा बिल आता था, लेकिन LED आने के बाद ये एकदम गेम चेंजर हो गया है, एंड इससे जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं गणेश कुमार, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इंडिया का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 19 फरवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2029 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे, एंड यहीं पे ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे राजीव कुमार को, ठीक है, गणेश कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है साइंस एंड टेक की बात करें तो इंडिया का 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 इन्होंने अपनी अपनी वेट टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया है। ये बेसिकली एक सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए, सी एक्सप्लोरेशन के लिए काम आएगा। वेरियस टेस्ट नीचे किए जाएंगे एंड एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा इससे मत्स्य 6000 को, राइट। इसको डेवलप किया गया है NIOT के द्वारा। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट इसको डेवलप किया गया है। एंड इसका जो ये वेट टेस्टिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी? अभी L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में इन कट्टुपल्ली पोर्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में ये हमें देखने को मिली थी इसकी टेस्टिंग, राइट। एंड NIOT के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। अभी इसका ड्राई टेस्ट किया था, 500 मीटर ऑपरेशनल रेंज रहेगी इसकी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए इसको फर्दर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के ऊपर। हम बात कर रहे हैं 38th नेशनल गेम्स की, राइट। उत्तराखंड के द्वारा इसको होस्ट किए गए थे। एंड सर्विसेज ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया 121 मेडल से। ये क्या है? सर्विस SSCB, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने टॉप किया है ये 38वें नेशनल गेम्स। 121 मेडल के साथ इन्होंने यहाँ पे टॉप किया, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेडल टैली, लेट मी शो यू है। यहाँ पे आप पहले देखिए, ये आपका मैस्कॉट रहेगा, करेक्ट। एंड ये 38वें नेशनल गेम्स थे। महाराष्ट्र की सेकंड पोजीशन रही यहाँ पर, हरियाणा थर्ड पोजीशन पे रहा। और इसकी थीम था इस गेम का ग्रीन गेम्स। लेट मी शो यू द लिस्ट ऑल्सो। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा, फोर्थ मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंड जैसे मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैस्कॉट है, इस मैस्कॉट का नाम क्या रहेगा? मॉली, राइट। लोगो जो ये है, ये लोगो का नाम है द मोनल, करेक्ट। और टैगलाइन रहेगी संकल्प से शिखर तक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वेटरन स्पेस साइंटिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी आर मनिका वसागम। इनका रिसेंटली निधन हो गया स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 84 इन बेंगलुरु कर्नाटका। इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड ये काफ़ी वेटरन या फिर काफ़ी फेमस इसरो साइंटिस्ट रह चुके हैं, करेक्ट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है 84 की एज में। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, मैमल्स के ऊपर ये बुक रहेगी जो कि माउंटेन्स में फाउंड किए जाते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, राइट। कौन इंस्टिंक्ट हैं या कौन यहाँ पे एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट हैं, कैसे उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करें, इन सब के ऊपर ये बुक रिलीज़ की गई डॉक्टर M.K. रंजीत सिन्हा जी के द्वारा। ये एक मेंबर है रॉयल फैमिली ऑफ वाकनेर इन सौराष्ट्र गुजरात। एंड इनकी ये चौथी बुक रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है, उन ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने बुक रिलीज की विजन टू विक्ट्री अनलीशिंग इंडियाज SME प्लेटफॉर्म। SME इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया की 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट होती है, 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ से SME से देखने को मिलता है। एंड कोविड-19 के बाद इन्होंने जो रिकवरी दिखाई है उसको यहाँ पे इस बुक में दर्शाया गया है। पूछा गया है इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे, वो हैं अजय ठाकुर के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई, ऑथर की गई। एंड ये बुक रिलीज की गई, पब्लिश की गई इनविंसिबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? मोदी लोग कन्वर्सेशंस फॉर अ विकसित भारत, राइट। तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। एंड ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द UK बेस्ड क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एंड इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की रामनाथ कोविंद जी को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ये बुक बेसिकली न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई थी। एंड इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक काफ़ी फेमस रेडियो शो है जो है मन की बात। इसके बारे में इसका इम्पैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया, राइट। ये कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। एंड इससे कम्युनिकेशन को यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन द लीडर्स एंड सिटीजन्स, उसको यहाँ पे ओवरकम करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ लेट मिस्टर रतन टाटा अ लाइफ? थॉमस मैथ्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रतन टाटा जी का निधन हो गया, राइट। एंड काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये, एंड काफ़ी बड़े ही फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इनके बिहाफ पे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उद्योग भवन का नाम रीनेम किया है। आप मुझे बताओ होमवर्क में क्या नाम रहेगा उस नए उद्योग भवन का, राइट। देन पूछा जा रहा है ये ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा, ये बायोग्राफी किसके द्वारा रिलीज की गई? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड
3 publications of the Supreme Court of India in New Delhi, राइट। तो 3 पब्लिकेशंस ये द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई हैं। कौन सी एडिशंस हैं ये? जस्टिस फॉर नेशन, प्रिजन इन इंडिया एंड लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल, ये 3 लॉन्च की गई हैं इन प्रेजेंस ऑफ संजीव खन्ना जो कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द रिलीज बुक वाई द हैक नॉट, ये को ऑथर हैं अर्पणा जैन के साथ। तो खुशपाल सिंह, राइट, ये को ऑथर रहेंगे अर्पणा जैन के साथ। यहाँ पे इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, एंड ये बुक बेसिकली बताती है कि कैसे सक्सेस स्टोरी इनकी यहाँ पे रही, राइट। खुशपाल सिंह, केपी सिंह ये है कौन? बेसिकली ये चेयरमैन है ऑफ डीएलएफ, करेक्ट, एंड इनकी क्या जर्नी यहाँ पे रही। अर्पणा जैन जो कि इन दोनों की क्या क्या अपनी लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, क्या क्या लीडरशिप स्टोरीज हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट बुक्स एंड ऑथर्स। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। नेम द रिनोन फिजिसिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जिनका भी निधन हो गया अक्टूबर 2024 में। तो रोहिणी गॉडबोले, राइट, ये वो रिनोन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड यहाँ पे साइंस में भी। 71 की एज में इनका निधन हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में। इनका जन्म 1952 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। देन इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 में, एंड फ्रेंच नेशनल ऑफ मेरिट से 2021 में इनको सम्मानित किया गया था। मूविंग ऑन, पद्मश्री अवार्डी एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर बिबेक देबरॉय का निधन हो गया था नवंबर 2024 में। किस फील्ड में इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री से? 2015 में। तो लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको सम्मानित किया गया था। ये मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के, जो कि 2015 में फॉर्म हुआ था, 2019 तक ये यहाँ पे मेंबर रहे थे। देन इनको पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। देन ये चेयरमैन बने थे ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2017 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उन रिनोन गुसादी डांसर मास्टर एंड पद्मश्री अवार्डी का नाम बताओ जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया। वो है कनाका राजू, राइट। गुसादी ये एक फेमस फोक डांस है, कहाँ का? तेलंगाना का, राइट, एंड ये राजगौंड ट्राइब में बॉर्न हुए थे, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उस फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट का नाम बताओ जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी में ये की पेटिशनर थे जिनका भी निधन हो गया है अक्टूबर के महीने में। वो हैं कौन? के.एस. पुट्टुस्वामी, राइट। 1926 में इनका जन्म हुआ था इन कोलार कर्नाटका। 1952 में ये एडवोकेट बने, एंड 1977 में ये जज बन गए थे कर्नाटका हाईकोर्ट के। नेक्स्ट, नेम द पद्मा भूषण अवार्डी एंड फोक सिंगर जिनका भी निधन हो गया इन नवंबर 2024। तो वो है शारदा सिन्हा, राइट। ये रिनोन फोक सिंगर हैं, पॉपुलरली नोन एज बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार। 72 की एज में इनका निधन हो गया ड्यू टू ब्लड कैंसर इन न्यू दिल्ली, राइट। एंड इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में, एंड पद्मश्री से इनको 1991 में। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज ग्रुप जिनका निधन अक्टूबर में हुआ। तो टीपी गोपालन नैम्बेयर, राइट, ये फाउंडर हैं ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरीज के। 94 की एज में कर्नाटका में इनका निधन हुआ। 1929 में इनका जन्म हुआ था कन्नौर केरला में, एंड बेसिकली ये जो बीपीएल है ये वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, एंड ये इनके फाउंडर थे। मूविंग ऑन, वर्ल्ड रिनॉन्ड मृदंगम स्कॉलर इनका निधन हो गया अक्टूबर में। वो कौन है? वो है वारदराव कमलाकर राव, राइट। इनका रिसेंटली निधन हो गया, एंड इन्होंने सेवरल अवार्ड्स भी जीते हैं सच एज योर सेंट्रल संगीत नाटक अवार्ड। आंध्र प्रदेश में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 88। इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ था 1936 में। नेक्स्ट, इन नवंबर इंडिया के लेजेंडरी सारंगी एक्सपोनेंट एंड पद्मा अवार्डी पंडित राम नारायण का निधन हो गया। किस साल में पंडित राम नारायण ने रिसीव किया पद्मश्री अवार्ड? तो 1976 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया था। पद्मश्री हुआ 1976 में, पद्मा भूषण हुआ 1991 में, एंड पद्मा विभूषण 2005 में, और ये सभी किस फील्ड में दिए गए? आर्ट्स की फील्ड में इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन बताओ, अभी रिसेंटली मणिपुर में वो कौन थे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड अब वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल रख गया है। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंडर आता है ये भी बताओ। देन सेकेंड क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? थीम बताओ, एंड हमारा इंडिया क्या रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। थर्ड, इंडिया ने यूएसए के लिए
कि 2 प्रोडक्ट्स पर अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम कर दी है। कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है, ये बताओ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का होमवर्क क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे अटेंड करना है।